मुस्कान का प्यारा सा महकता सा चहकता सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आपके नज़दीक कोई भी दुख और परेशानी है तो हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस दुख और परेशानी को आपसे दूर कर दे। तो फैसलाबाद, यू आर लिसनिंग द प्रोग्राम ड्राइव टाइम विद आरजे मुस्कान। आप ये प्रोग्राम सुना करते हैं, मेरा और आपका साथ हुआ करता है हर पीर और हर बुध और जुमेरात की शाम जो है वो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये साथ जो है वो हुआ करता है। ये साथ सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का हुआ करता है और इस साथ में हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि आपसे कुछ सिखाया जाए, आपको कुछ सिखाया जाए, आपसे कुछ सीखा जाए और इस 2 घंटे के साथ को बहुत ही खुशगवार जो है वो बनाया जाए। फैसलाबाद, आप भी इस खूबसूरत से साथ में हमारा साथ दे सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 033419666966 0343419666966। आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फैसलाबाद हमारा फेसबुक का पेज है ड्राइव टाइम के नाम से, आप वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी खूबसूरत सी फैमिली का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। फैसलाबाद मौसम जो है वो थोड़ा सा तब्दील होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी जो है वो दिन में बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो ये लग रहा है कि सर्दियां नहीं आएंगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू महकमा मौसमियात तब्दीली जो है वो आएगी। एंड ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन दिस चेंज, और हमें जो है वो तब्दीली के साथ खुद को तब्दील करना होगा। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो इस चीज़ की हैबिचुअल नहीं है, इस चीज़ की आदी नहीं है, और हर दूसरा शख्स जो है वो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम में मुब्तला है। तो आपने इस सूरत हाल में अपनी हाइजीन का, अपने जो है जर्म्स का बहुत ख्याल रखना है। जर्म्स का आपने इस तरह ख्याल रखना है कि आपने अपने जर्म्स जो है वो किसी दूसरे को नहीं देने, बल्कि अपने तक रखने हैं। साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मेक श्योर डैट कि आप जो है वो घर आकर अपने जो भी क्लॉथ्स हैं या जो भी आप चीज़ें अपने साथ लेकर जाते हो उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा रख के फिर उसके बाद अपने घर वालों से मिले। क्योंकि घर में अगर कोई बुज़ुर्ग रहता है, कोई बच्चा रहता है, तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो आपसे कम होती है। तो जब भी हम जाकर मिलते हैं तो हमारे अंदर जितने भी जर्म्स हैं हमारे कपड़ों के साथ, हमारी वाटर बॉटल के साथ, हमारे बैग्स के साथ लगे होते हैं, तो वो सारे जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। हाइजीन को मेंटेन करने के साथ साथ आपने जो है वो ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना जो कि जिनकी तासीर ठंडी हो, क्योंकि इस स्टेज में आपको चेस्ट इन्फेक्शन होने के ज़्यादा खदशात हैं। तो आपने जो है वो अपने आप को नेबुलाइज भी करना है, स्टीम भी लेनी है और साथ साथ जो है वो कहवे या फिर चाय का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो चेंज को बर्दाश्त कर सके। और मौसम जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा तब्दील होगा, सर्टन चेंज आएगा। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब जो है वो मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है। पंखे में भी हमारा गुजारा हो रहा है। लेकिन फैसलाबाद, आपने अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई बुखार है, गला ख़राब है, फ्लू है या कफ है, तो आपने किसी भी करीबी डॉक्टर से रुजू करना है। ख़ुद जो है वो नीम हकीम ख़तरा जाम नहीं बनना। हम क्या करते हैं, ख़ुद जो है वो कोई भी मेडिकल स्टोर से लाकर गोली खा लेते हैं और बाद में हमारा इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है कि कोई भी मेडिसिन जो है वो आप पर असर नहीं करती। अगर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी हेल्थ जो है वो सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ साथ जो है, जब तक आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक आप दुनिया में या कहीं पर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो, और कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। और अगर आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक हमवार रास्ते पे रहें, तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। फैसलाबाद, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक भी हम डिस्क्लोज़ करेंगे, लेकिन
Assalamu alaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Meher. It's an immense pleasure to be the part of this show with our distinguished guest Ms. Afshin Javed. She's head of Department of Design and Interiors at the University of Faisalabad. She's graduated from NUST and she has a prompt personality. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Thank you so much for coming to this show. Lovely. I think it will be my pleasure. Ma'am, being a head of department, can you please give us a brief introduction related to your design and interior department? Yes, definitely. Department of Design and Interiors. We has been established since 2014, and it's gonna be mashallah 10 years now in September 2024, and we will be inshallah celebrating our 10-year anniversary as well. We basically offer 2 degrees as undergraduate degree programs. One is Bachelor of Interior Design and the other one is Bachelor of Graphic Design. These 2 degrees are 4-year programs, and then we also offer 2-year associate degree programs in the same title, Interior Design and Graphic Design. And from this year onwards, inshallah, we are also offering Masters in Interior Design. So it's a graduate degree of 2-year span. Okay. And we are taking admissions in spring 24 and fall 24 for master's degree as well. Okay, ma'am. Thank you so much. How do you stay connected with academia and field demands? And how do you engage your students? कि उनको किस तरह से pursue करते हैं आप parents को, students को कि वो आएं इस field में खुद को जो है वो flourish करें? I think both the degrees that we are offering either graphic design or interior design, I believe it's the demand of the day. You cannot anything and everything that we're dealing with, the entire scope of our lifestyles revolve around, like if you look around yourself, we're actually in a studio and that had to be designed by an interior designer. Or, this entire interview will eventually be edited by a graphic designer. So these degrees, they kind of revolve around all the disciplines, and their placements also are going to be in all the disciplines. So our department are producing graduates that are capable of working in the field, and they are equipped with the right knowledge. They are equipped with the right skills to operate and manage in the field. And hence, eventually, when they do graduate, it is very easy for them to get placed in the right positions all across Pakistan. So few of our graduates are actually working in Karachi, and few of them have gone to Lahore, and some of them are working in Faisalabad itself. So it's just that students, definitely one does need to have an interest. It means you are trying to encourage experimental work. Yes, we are encouraging experimental. It's just that our curricula is designed in a way that that entire syllabus has studio hours and theory hours. So it is designed in a way that they have to design projects, they have to work on them. And eventually when they do go in the field, in any of the positions, as like if they're doing their own job or if they're doing their own practice, so it's the same, it's going to be the same for them. So what do you think, how it can be and how much it can be challenging? Because as you know, the technology is so vast and there are so many innovations. Then how can you relate your academia? So the thing is, our entire curricula, be it graphic design or interior design, is designed to meet the requirements of the field. Okay. It is designed in a way that every year we are conducting these board of studies meetings, and in which we are calling experts to from the field to come and tell what is the requirement of the field and how can we integrate that into our curricula. So the entire curricula is designed in a way and is revised every year upon the needs of the day. Exactly. And the entire, the courses are all software based. So by default, we are integrating the need of the technology, or being tech savvy. All the students and know how to operate these softwares and work on them and then produce the work. Yes, it is challenging because, things are getting changed every day. Yes. But that's why we are here. We are, meeting the demand of the field, the industry, and our students are well prepared and well equipped to match those requirements. So what do you think, being a head, definitely you are going to supervise a lot of things at the very same time.
So, is there any specific society under your kind supervision, under the Department of Designs and Interiors? We do have two societies. One that is working with graphic design curricula and the other one that is working with interior design. Okay. But they both come under the umbrella of arts and design. It's called an arts and design society. And we cover, a lot of workshops and seminars, hands-on workshops regarding a lot of different fields of visual arts. So, like 2 weeks ago, we conducted a workshop on clay pottery, and last month we conducted a workshop on lino cut printmaking. So these societies, we all the students are then and again engaged with any activities related to visual arts or design, Yes. and are occupied with whatever their interests are, and they're going about it. Ma'am, as we all know, there are a lot of stuff, there are a lot of things that are going to be happen because this is the era of artificial intelligence. So what you think? How can you up to date your faculty, and how could you motivate the students to be the more and more engaged in the upcoming This competitions? artificial intelligence, AI topic is the talk of the town these days. It's like a hot favorite Exactly. topic for everyone to Yes. discuss. I believe, like any other technology, yes, it is, a tool, a medium that students have to adopt, that Okay. faculty has to adopt. But then and again, if you don't have your, like this over here is the supercomputer all human minds Exactly, have. yes. So this is the one that you need to use in order to use that AI technology. Yes. And this is what I tell my students as well. So yes, we do engage them with the right kind of. के अंदर इतनी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। अभी भी अगर आप सुबह सवेरे उठें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि स्मोक का एक फैक्टर जो है वो अभी भी हमें अपने बादलों में, अपने मौसम में नज़र आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं, पाकिस्तान एंड फैसलाबाद, क्योंकि आप ही हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप ही हैं जो अप्लाइंसेस का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ही है जो कि अपनी क्लीननेस को, अपनी हाइजीन को, अपने घरों को बिल्कुल भी साफ़ जो है वो नहीं रख रहे। तो फैसलाबाद हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ हम ये भी शेयर करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट को, अगर हम इस माशरे में रहते हैं तो उनको क्या स्टेप्स लेने होंगे। लेकिन हम जो है वो हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो स्टेप ले, लेकिन आपने जो है वो इसमें ख़ुद स्टेप लेना है। तो ही हमारी जो केमिकल्स हैं, जो भी हमारे एयर पोल्यूशन को जो है वो कंटेमिनेटेड कर रहे हैं, जो और ज़्यादा जो है वो इसको बढ़ा रहे हैं, उसको हमने कैसे कम करना है। और वो कंपनीज जो कि हमारे पास हमारे शहर में इंस्टॉल है, हमने उसको भी कैसे कम करना है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फैसलाबाद, इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाने से पहले यू विल हैव टू थिंक दैट कि हमारा क्या रोल है। अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा क्या रोल है, हम इस मुआशरे में रहते हुए कैसे गंदगी को कम कर सकते हैं, कैसे आलूदगी को कम कर सकते हैं, और कैसे जो है वो अपने वेदर को डिज़ास्टर्स वेदर होने से बचा सकते हैं। तो फैसलाबाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपसे करेंगे मज़ीद बातें, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं शो के बहुत ही खूबसूरत ट्रैक की तरफ। एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। सुनते रहिएगा on artificial intelligence as well, and we teach them how they can write prompts and get the right kind of information out of it. But to get that information is one thing, but to process it, analyze it, and then use it as an input in their design projects is another thing. And that is what we teach our students over here, that how to analyze all of this information and the research they are doing, Yes. and how to convert into a positive input for all of their design projects that they're So what kind of research work? To be honest, anything and everything, but Okay. it is most of our design projects are user centered. They are functionality based. So Are they specifically for the final year students? no. That is also a very interesting, thing about our curriculum. Our students, they start getting engaged in design projects since semester 1, since day 1. That's how, we just, it's just that the level of difficulty is different for the students who are in first semester as compared to the students who are doing their thesis Yes. in their final year. Yes. The scope is very wide. The objectives and rationale are very, more, deeply sought and sensitive.
but they do get engaged in projects. Their entire curriculum is designed that they have studios in which they are conducting projects, and they have theory subjects in which they are getting all the lectures and, seminars and other So, kind ma'am, of. does your department provide any platform to the students or internship programs? That is also the part of the curriculum that students, it is mandatory for them to conduct 9 weeks of internship. So, how can they approach? Basically, what happens is usually the department gets them connected with the people in the field, offices and different practices, firms, apprenticeships. So we get them connected. Some of them, they come up with their own links and they just go and apply over there. But it is mandatory for them to conduct nine weeks of internship in one semester and 9 weeks of internship in the other semester. So that happens every summer. So the summer of second year and the summer of third year, they have to, complete this internship, and then they get evaluated by their offices as well, whosoever they worked under. Yes. We send their evaluation forms, and we take their feedback that what do you think is missing in with these students, and how can we integrate that into their education. So it is a constant feedback loop Yes. that we get into. Moreover, ma'am, being ahead, what are your goals? To be honest, I want to see these students leaving their mark at an international level. And I actually do say them to these students, male and female, that why don't you see yourself that there's a so and so designer working in America, and there's a so and so designer working with Apple or Amazon. Why don't you see yourself being placed over there? So yes, we do say that Faisalabad is the third largest city of the country, and we have a lot of human resource that is being produced over here. So it means you are having a leadership. Yes, definitely. I believe that is my role to make them realize, and also to inspire them, so that those students can see themselves being placed at such important and dignitary positions, and actually doing some heartfelt works, a work that leaves a mark, a work that makes a change in the environment. And these students are trained. Their courses, their curriculum is designed in a way that addresses the modern world problems, and how to create solutions from them through their design projects, through their concepts and ideas. And that is my goal, that these students eventually work internationally. They get placed all over these places and leave a mark with their work, a positive mark in the world. So how do your students get exposure to the field? The thing is, in each of the semester, there are at least 2 mandatory academic tours or academic trips that we, ensured we take our students to any of the other cities. And there's one mandatory trip that we have to take locally within Faisalabad. And all of these tours or trips are academic trips, and they are either taken to their field-related industrial organizations, or to maybe, for example, for interior design students, we take them to wood workshops and material workshops to give them an exposure of how things are being, made, manufactured, and then getting delivered. We also do take them to a lot of museums, art galleries, and another genre that we cover is that we take them to different institutes who have similar degree programs. So we take them to their annual degree shows, which are annual thesis shows or annual degree shows. So that is a very interesting way to see what all of these students, their contemporaries are doing and producing, and what kind of work they created, and what kind of caliber do they have. So these students are constantly given that exposure of the field, of their contemporaries, because eventually when they're going to go out, they're going to work with the similar kind of people in the field. Exactly. So that also happens every year, every semester, and we try to cover a wide array of these industries and other organization visits. And we have told them that these are mandatory to attend, because usually at some of these places we go and we conduct
seminars over खुशामदीद there. We फैसलाबाद, यू आर ask the लिसनिंग द experts प्रोग्राम of ड्राइव that टाइम विद आरजे organization to मुस्कान, give और them आप a ये brief प्रोग्राम सुना seminar करते हैं or मेरा और conduct आपके a brief साथ हुआ workshop. करता है हर बुध और जुमेरात की शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे 4 to 6 PM। और ये साथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे का हुआ करता है, और आप इस खूबसूरत से साथ में हमारा साथ दे सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 0334196696, 0334196696। तो फैसलाबाद, जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, आलूदगी की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा रोल आता है कि बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ इंडिविजुअल, हम जो है वो इस चीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपके घर में जितने भी अप्लाइंसेस हैं, जब भी आप अप्लाइंसेस का इस्तेमाल नहीं करते, लाइट्स का इस्तेमाल अगर आपने नहीं करना, फ़ैन्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना, तो इसको स्विच ऑफ करें। जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट जो है वो उस एनर्जी को लेगा, और साथ साथ हमारी जो ओजोन लेयर है, जो कि एक प्रोटेक्टिंग लेयर है हमारे ज़मीन और सूरज के दरमियान, वो लेयर जो है वो जितनी ज़्यादा उसके अंदर सुराख बनेंगे, ज़ाहिरी सी बात है उतनी ज़्यादा हमारे अर्थ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो आपने जो है जितनी ज़्यादा एनर्जी को आप बचा सकते हैं उतना ज़्यादा एनर्जी को आपको बचाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगले जो है 10-20 साल के बाद जो है वो हमारे पास एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है जो कि हम कह सकें कि हमारे पास एनर्जी यहाँ से आएगी। जितना ज़्यादा आप एनर्जी को वेस्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी मच क्रिटिकल फॉर यू कि आप जो है वो उस एनर्जी को मेंटेन करें, या फिर आप जो है वो एनर्जी को आगे फ्यूचर में यूज़ करें। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप जो भी अप्लाइंसेस अगर आपने इस्तेमाल नहीं करने, तो उसको बग़ैर किसी मकसद के ना चलाएं। और साथ साथ आपको चाहिए कि आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करें। अगर आप जो है वो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो केमिकल जो है वो किसी भी व्हीकल से निकलेंगे। जहाँ पर एक गाड़ी में 6 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, या एक बस में 40 से 50 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, वही अगर 40 से 50 लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ, अपने अपने मोटरसाइकिल लेकर बाहर जाएंगे, उतना ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम होगा, और साथ साथ हमारी हवा जो है उसमें आलूदगी भी ज़्यादा आएगी। और दिस इज़ नॉट अबाउट एयर पोल्यूशन। यहाँ पर एक बहुत ही बात मुझे याद आई है, वो बात ये है कि हॉर्न बजाना, जो कि किसी भी, अगर आप इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करें, अमेरिका की, कनाडा की, यूके की, तो वहाँ पर हॉर्न बजाना जो है वो एक जुर्म माना जाता है। और यहाँ पर अगर आप सुबह सवेरे सड़कों पर जा रहे हैं तो हॉर्न पे हॉर्न देते हैं लोग, ताकि वो लोग जो हैं वो आसानी से गुजर सकें। लेकिन फैसलाबाद, अगर आपने किसी मंजिल पे जाना है, तो अगर आप 1 घंटा पहले भी उस मंजिल के लिए जाने के लिए निकल जाएंगे, या अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेंगे कि आप जल्दी में हॉर्न ना बजाएं, इससे क्या होगा कि आपका तो नुकसान होगा ही होगा। आपको तो उस टाइम पे बहुत मज़ा आ रहा होता है कि अगला बंदा जो है वो साइड पर हो जाए, मैं फटाफट गुजर जाऊं, लेकिन इट इज़ अ काज ऑफ ईयर कैंसर। ये जो है वो आपके कानों का कैंसर करवा सकता है। अगर आप हॉर्न बजाने से रुक जाएंगे, थोड़ा सब्र कर लेंगे, देन डेफिनेटली फैसलाबाद आप किसी बड़ी बीमारी से बच जाएंगे। और बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ फैसलाबादी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रेशो है हॉर्न बजाने की। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के ऊपर भी इतने ज़्यादा मॉडिफाई हॉर्न लगा दिए गए हैं, ताकि अगर वो बंदा रोड की नुक्कड़ पे भी हो तो आपको जो है वो पूरा रोड हिला देता है। इतने उन्होंने जो है वो ज़बरदस्त किस्म के हॉर्न लगा दिए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक पुलिस, और रिसेंट जो है हमारी एक ट्रैफिक पुलिस की एक वेबिनार में भी उन्होंने ये बात की है कि हॉर्न पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी जाएगी। तो जो लोग हॉर्न बजाने के ज़्यादा शौकीन हैं, वो जो है वो इस बात पर अपने कान खड़े कर लें कि अब जो है वो तब्दीली आने वाली है, एंड डेफिनेटली चेंज इज़ ब्यूटीफुल। अगर हम चेंज जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम जो है वो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके साथ साथ फैसलाबाद, आपको चाहिए कि आप नॉन टॉक्सिक मटेरियल जो हैं, जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं और बाकी भी मुंशियात का इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम करें। अगर उन्होंने करनी भी है तो किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ पर उसका स्मोक जो है वो हवा में जो है वो ज़्यादा खुली जगह पर करें, ताकि वो हवा में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। और आपके पास अगर कोई भी इंसान खड़ा है, उसको किसी भी किस्म का रेस्पिरेटरी अगर इशू है, सांस का मसला है, तो उससे भी दूर हटें, ताकि वो बंदा भी उससे इफ़ेक्ट ना हो।
और साथ साथ फैसलाबाद आप जो है वो जितना ज़्यादा जो है वो वेस्ट अपना किसी भी कंपनीज़ को देंगे, या फिर अगर आपके घर में कोई गाड़ी लगी हुई है जो कि गार्बेज को कलेक्ट करती है, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप जो है वो कुछ पैसे देकर अगर अपना वेस्ट दूर कहीं फेंक देंगे या फिर उसको रिसाइकिल कर लेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ताकि हमारा जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है, रीयूज़ का प्रोसेस है, वो भी चलता रहे। उसके साथ फैसलाबाद आपने जो है वो एयर पोल्यूशन में आपने जो है वो सड़कों का भी ख्याल रखना है। जो सड़क जिसके ऊपर अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो आप जो है वो ड्रिफ्टिंग से गुरेज करें। कई लोग होते हैं जो शौक में जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं गाड़ी को, और ड्रिफ्ट करने से जो रोड है वो भी तो डैमेज होना ही होना है, साथ साथ उसके अंदर से एक ऐसा केमिकल रिलीज़ होता है जो कि हमारे वेदर को, जो कि हमारे स्काई को, हमारे इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट करता है। तो फैसलाबाद दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल लेवल, कि अगर आप एक इंसान हैं, आपने एक इंसान होने की हैसियत से अपने मुआशरे में क्या रोल अदा करना है, कि अपने अप्लाइंसेस को कम करना है, कूड़ा क्रिकेट जगह जगह नहीं फेंकना। जो लोग पान या मुंशियात का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो जगह जगह थूक ना फेंके, स्प्लिट ना करें, बल्कि आप कोई भी इसका प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। और साथ साथ सिगरेट नोशी से जो है वो आपने गुरेज करना है। अगर आप करते हैं तो किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ पर किसी दूसरे को नुकसान ना हो, जहाँ पर आप खुद तो नुकसान ले ही रहे हैं और अपने फेफड़ों को जंग लगा ही रहे हैं। वहाँ पर आपको ये चाहिए कि अगर आप खुद को आपको अपना प्यारा नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को अपना बहुत प्यारा है, और वो शख्स किसी दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो फैसलाबाद आपने जो है वो इस चीज़ से गुरेज करना है। और साथ साथ जितना हो सकता है एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी है। तो फैसलाबाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपसे करेंगे मज़ीद बातें, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं शो के बहुत ही खूबसूरत ट्रैक की तरफ, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। सुनते रहिएगा वेव एफएम 96.6 विद आरजे मुस्कान। So that is also a learning experience that comes under field learning experience. And similarly for graphic design students, we recently took them to a print and publication industry. It was on a very large scale. They were covering a lot of printing for their international clients. And the students got amazing experience of how something that they're designing on the computer screen gets eventually converted into a product, and then how does eventually it gets shipped off. So that was a very good inspiration for them to see that their work will eventually be projected in this way. It is a part of the curriculum. And So as you have talked earlier about the studios, what kind of studios? Studios. So what basically happens is, like I've told you, each of the course that they study has two components. One is the theory component, in which they are being taught regarding Yes. whatever the history or the context of that particular subject is. And then the other is the studio component, in which they have to apply that knowledge. And they have to apply whatever they have learned and conduct it into any kind of a project. Those studios are also available in the University Yes, of that Faisalabad? those studios, it is basically the part of the infrastructure of the University of Faisalabad. Okay. So each semester has their own studio. They are well-equipped studios. They have their own working stations. Let's say, for example, if there's a drawing studio, so the equipment that is available in that studio is all relevant to Related drawing. to- And then they have their design studios, so they have their workstations over there, and they spend their entire days working their studios, brainstorming, conducting research, interacting with their fellow students, and then interacting with their faculty members who come and conduct those studios and help them eventually develop a project over there. And then eventually that project is being displayed, is evaluated, and that is one very interesting aspect, that all of these projects are externally evaluated. So what happens is that since all of the studios are being conducted by the faculty members, Okay. and we ensure, once the project is fully developed, and we make sure that the student present it, just like how, in all of the other degrees, they have a defense of their project.
Exactly. of their final year project. Final year project. But for our students, it's like an everyday thing. It's like an every semester thing. So they give their external jury. So we call in experts from the field. We call in experts from faculty members skill from their- other institutes. So they come and evaluate their work, and then they guide them Exactly. that what better could they have done, or how could they have improved their work, or what mistakes they have made, and how can they correct them. I think this is the one of the best. Yeah, it's a very good technique for students to learn, and for students to get their work evaluated. And you do see, because So how do you evaluate the work of your faculty as well? basically, anything and everything that a faculty does gets reflected in the work of a student, his or her performance. Okay. So that we can easily evaluate, okay, if the student is performing So do well. you specifically work on faculty skill enhancement? Yes, we do work on faculty skill enhancement. We send them to different trainings that HEC conducts or PHEC conducts as well. And then they also attend various workshops, design relevant workshops. Recently, there was a design summit conducted in Lahore. A lot of our faculty members went and attended that as well. So again, like I believe it's like a personal interest for the faculty members as well. Exactly. Yes. But at the same time, it is a requirement of their job that they have to be updated. They have to keep themselves updated with whatever is happening in the contemporary scenario. And It's need of the hour. it's the need of the hour, and all of these seminars and training workshops are conducted within the university as well. So the University of Faisalabad have these faculty training programs as well, FTPs, that happen annually or after every semester. That is also a very important aspect that, it plays a role in faculty development. As you have talked earlier about society, so how do you lead your society with the leadership thoughts? So for society particularly, we let the students run the show. Okay. We want our students to be empowered. We want them to, take the charge, because obviously they are the next leaders and the next generation that is going to lead the entire, this country. So with societies particularly, we let the students do whatever they want to do, however keeping in, aligned with the goals of the department. But with the other kind of events that the department holds, we definitely micromanage it to an extent, because a lot of energy and effort gets put. There's a certain budget allocated every year to all of these events. So you have decided your budget related to your events? Yes, exactly. So what happens is that each year we draft an academic calendar, and that academic calendar covers all the extracurricular and co-curricular activities and events. So let's say if we're going to have a photography workshop, we're going to have a pottery workshop, we're going to have a design seminar, and then there are certain field visits or tours to Islamabad or Lahore. They are scheduled each semester, and they're aligned with their respective courses. So is there any recent event you have conducted in the University of Faisalabad? Recently, we just, last week we went to that print and publication factory that I mentioned. And this, like next Monday, we're going to have a photography workshop. We're calling in an international filmmaker, award-winning filmmaker. He is Pakistani, but he has worked internationally, and he's going to come in. We're calling in from Lahore, and we offer a course of photography to our students. So it is directly aligned with the objectives of that course, and that photographer is going to give them a very deep insight. कुछ सिखाया जाए और इस 2 घंटे के साथ को बहुत ही खुशगवार जो है वो बनाया जाए। तो फैसलाबाद आज का जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है दैट इज़ एयर पोल्यूशन। आज हम एयर पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं और हम ये सोचने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीइंग अ इंडिविजुअल, अगर हम एक मुआशरे में रहते हैं तो हमारा क्या रोल है कि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको चाहिए कि अपनी एनर्जी को कंजर्व करें। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, उतना ज़्यादा ये अप्लाइंसेस जो है उसके अंदर से ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं और हमारा इसमें इंडिविजुअल रोल जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपने कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल
इस्तेमाल करनी है, उसके बाद उसको प्रॉपर रिसाइकल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह ही अगर आपके घर में कोई गिलास टूट जाता है या फिर कोई ऐसी चीज़ टूट जाती है जिससे अगर जो लोग गार्बेज कलेक्ट करते हैं उनके हाथ पे लग सकता है, तो आपको चाहिए कि आप उसको प्रॉपर तरीके से किसी भी शॉपर के अंदर या उसके इर्द गिर्द अगर आप पेपर लगा देंगे और उसके बाद उसको पैक करेंगे तो कोई जो है वो बड़े नुकसान से बच सकता है। हम इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं सोचते, बल्कि हम ये सोचते हैं हाँ गिलास टूट गया है, कोई जग टूट गया है या कोई भी चीज़ टूट गया तो हम फटाफट उसको फेंकने की करते हैं, बल्कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो फेंकना है। उसके साथ साथ फैसलाबाद, अगर आपके घर में कोई मरीज़ है, आप नीडल्स का इस्तेमाल करें, ड्रिप्स का इस्तेमाल करें, तो मेक श्योर दैट कि आप नीडल को प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करें, ड्रिप्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करें। वो लोग जो इनको इनके बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, एड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो वो लोग जो हैं वो इसी ड्रिप्स और इसी सरिंजेस को इस्तेमाल करके आपको ही जो है वो आपका ही किया हुआ अमल जो है वो किसी भी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से आपके ही आगे आता है। तो आपने क्या करना है, अपना किरदार जो है वो बेहतरीन रखना है। जब तक आप अपना किरदार बेहतरीन रखेंगे, अपने काम बेहतरीन रखेंगे और अपने जो भी वेस्ट है उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मुआशरा और आप ख़ुद जो है वो खुशहाल रहेंगे। उसके साथ फैसलाबाद, वो लोग जिनकी सड़क पर या सड़क पर कोई भी अगर कोई हादसा हो चुका है या फिर उनकी कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं सही, तो आपको चाहिए कि अपने बच्चे को जितना हो सकता है उस चीज़ से दूर रखें, क्योंकि सीवरेज सिस्टम इज़ वेरी मच इंजरियस फॉर द पीपल जो कि जिसको किसी किस्म की स्किन एलर्जी है या फिर किसी को कार्डियोलॉजिकल इशू है, तो उसको चाहिए कि अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी गंदा पानी खड़ा होता है, यहाँ पर सीवरेज सिस्टम सही नहीं है, तो आप जो है वो हमारी गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दी जाती, लेकिन फैसलाबाद आपने अपना किरदार बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देना है। जब आप ख़ुद अपना किरदार करेंगे, ख़ुद अपनी इस्लाह करेंगे, कभी कभार हम भी थक जाते हैं कि हम कब तक एक चीज़ के पीछे भागें, कब तक हम एक चीज़ को लेकर आगे चलें, कब तक हम कंप्लेंट्स करें, लेकिन वो कहा जाता है वो दरवाज़ा जो कि हमें बजाना नहीं आता, लेकिन हम जब बार बार उस दरवाजे को बजाते हैं कभी तो वो दरवाज़ा खुलता है। इसी तरह ही हमारे कुछ हालात हैं, कुछ सेटअप्स के हालात हैं, कुछ पॉलिसीज़ के हालात हैं, कुछ हमारे सोशल हालात ऐसे हैं, लेकिन आपने जो है वो अपना किरदार जो है वो बेस्ट देना है, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी करे तो आप जो है वो उस चीज़ के आंसरेबल हों कि मैंने अपना किरदार अदा किया था। जब हम खुद वो कहते हैं कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, इसी तरह जब हम इंसान मिलके इस माशरे को ठीक करने की कोशिश करेंगे, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, हर एक को उसका इंसाफ का उसका हक मिलना चाहिए, दैन डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो खुद ही सेटल होंगी। लेकिन फैसलाबाद, क्योंकि हम जो है वो किसी दूसरे को आगे जाता हुआ नहीं देख सकते, हम हसद करते हैं, पेशेंस नहीं रखते और ये तो बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारे से आगे अगर कोई निकल भी जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो फैसलाबाद आपने जो है वो अपना काम जो है वो खुद से करना है और अपने काम में जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करना है। तो फैसलाबाद, अब हम चलते हैं शो के बहुत ही खूबसूरत ट्रैक की तरफ, और जब हम ट्रैक से वापस आएंगे तो आज की एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। सुनते रहिएगा WaveFM 96.6 विद आरजे मुस्कान। how you can pursue a profession in photography, and how graphic design is linked with photography, and how Yes. it is a tool for visual communication. And that workshop is again the secondary component of that workshop is a photo walk. So he's going to take the students and conduct a photo walk, and then they're going to take those pictures and post process it. So it's an all-inclusive learning session for students, Yes. apart from what they're learning in studios. So the other students from the different departments can also be the Yes, part of they your can also be a society. part of any event that the society is conducting. All the students can participate. Many of them are open. They are just like walk-in. You can just come and see Okay. whatever is happening, and you can just come and engage with the event or the activity that is being conducted. However, the events of the department is exclusive for our design students, and we tell them that this is a very exclusive thing, so you should enjoy it and you should participate in it. So, ma'am, how students can approach you to your department and how to get admission in the University of Faisalabad? I think it's a very easy process. Okay. Our website is active.
www.tuf.edu.pk. Okay. And you can easily access all the information regarding the degrees, regarding the curriculum. Our entire scheme of studies is displayed over there. The eligibility criteria, all of that. So if any of the student after their secondary education, if they want to take admission in interior design or graphic design, all you have to do is just look up at the website and you can find everything over there and apply from there as well. We also conduct walk-in tours in our department, but they are scheduled at the times of admission somewhere around September. So if any of the students want to see the environment of the studios and the campus itself, we have curated tours for them. So we invite them over and we take them around the campus and the department. And lastly, like anything else, social media. We have a very active Instagram account and Facebook account, and we do display our day-to-day activities, our studio culture, studio life, our our experiences of the field, academic tours. All I think of it's that. quite easy. Yeah, so that is the go-to medium for this younger generation. To quickly, they can look up us online on Instagram. It goes by tough.design and interiors, and all of our work, student life, studio culture, department life is displayed over there, and they can have an easy access to that. And eventually, if they're interested, they can come and apply. Thank you so much, ma'am, for your precious time to share your thoughts. And definitely you have a leadership thoughts. I just, I do have a strong vision for this department, and we do see ourselves, our students, making a great mark and playing a great role in the uplifting of the community and the society through their work, via their work. And hopefully, inshallah, you'll see them eventually. It's an immense pleasure. Definitely. Thank you so much. It Thank was you. a pleasure as Thank you. well. So guys, I think you have learned a lot about how to get admission in the University of Faisalabad and how you get enrolled yourself to be the part of the Department of Design Khush Faisalabad, and you are listening to the Interiors. program Drive So Time with RJ let's we Muskan. तो have फैसलाबाद जल्दी से another अपने episodes पैगामात with शामिल कर लेते हैं। other हमारे leaders, शुरू का नंबर है with other 0341966966 experts of the different departments. So guys, stay with us for the other episodes where we'll definitely invite करम different अली है, experts उन्होंने from the हमें different फैसलाबाद से departments of ज्वाइन the किया। बहुत University शुक्रिया of सर हमें Faisalabad. ट्यून करने Then के लिए। how you can हमारे साथ महर explore मोहसिन है, the उनका University कहना of है वालेकुम Faisalabad at अस्सलाम, your क्या own हाल doorstep. है आपका? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। एंड खुश आमदीद। हमारे साथ शहरोज़ है, उनका कहना है अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके, थैंक यू सो मच एंड वेलकम यू इन माय शो। ईमान है हमारे साथ फैसलाबाद से, उनका कहना है गुड इवनिंग फ्रॉम फैसलाबाद, क्या हाल है मेरी प्यारी आरजे मुस्कान? आपके शो से हम बहुत इंटरटेनमेंट हासिल करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ईमान एंड वेलकम यू इन माय शो। हमारे साथ इकरा है, उनका कहना है हेलो माई आरजे, मैं आपका शो हर बार सुनती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका एंड खुश आमदीद। हमारे साथ मुनीर खान है फैसलाबाद से, बहुत शुक्रिया सर हमें ट्यून करने के लिए एंड खुश आमदीद। तो फैसलाबाद, नाउ इट्स टाइम फॉर द मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की मोटिवेशनल स्टोरी जो है दैट इज़ गोइंग टू अ रियल स्टोरी of the President of America, Abraham Lincoln. अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में परेशान है, कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, life is not a bed of roses. You will have to make your life a bed of roses. अब्राहम लिंकन, उनके बाप जो कि एक मोची थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में वो अचीव ना कर सके, लेकिन उनके बेटे ने उनका ख्वाब जो है वो पूरा किया। अब्राहम लिंकन की फैमिली इज़ अ वेरी बैकवर्ड फैमिली और उनके बाप को हर कोई मोची के नाम से जाना करता था, द बेस्ट शूज़ मेकर। एक दिन अब्राहम लिंकन जो है वो अपनी प्रेसिडेंटशिप से पहले एक कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ पर सब जो है वो उनको पता था कि इनके बाप जो है वो मोची हैं। उन सब ने इनका मजाक उड़ाने की कोशिश की और इस तरह ही मजाक उड़ते उड़ते वो बात जो है वो उनके कानों तक गई और पूछा गया उनसे उस कॉन्फ्रेंस में कि आपके वालिद जो हैं वो मोची हैं। एंड द पर्सन सेड टू हिम
मेरे वालिद जो हैं वो आई एडमिट के मेरे वालिद जो हैं वो मोची हैं, बहुत अच्छे मोची हैं, और वो अपनी इसी काबिलियत की वजह से जाने जाते हैं। और वो बहुत अच्छे जूते बनाते हैं कि मार्केट में अगर उनका नाम भी लिया जाता था तो ये बात उनके साथ सेडिमेंटल तौर पर रखी जाती थी कि दैट पर्सन इज़ डिनोटेड एज कि वो बहुत अच्छे जूते बनाता था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो भी बनाते थे और मैं भी बहुत अच्छा मोची हूँ। और साथ साथ उनको ये अल्फाज भी कहे गए कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, अगर उन्होंने आपके जूते बनाए हैं, कोई भी कंप्लेन है जो कि उस जूते से रिलेट है, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं या आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड द ऑल ऑडियंस स्टे क्वाइट। फैसलाबाद जब भी हमें किसी महफिल में बैठकर कोई बंदा आपकी वीक पॉइंट पे आपको टारगेट करता है, दैट सीम्स दैट कि वहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। दैट सीम दैट कि आपको मंजिल से पहले वहाँ पे गिराया जा रहा है। कभी कभार हमें अपनी कुछ बातों पर चुप रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार कुछ बातों पर बोलना, और ऐसा बोलना कि अगला बंदा भी उस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाए। दैट इज़ द थिंग दैट लिटरेचर टीच यू कि आपने कब बोलना है और कब चुप रहना है। कभी कभार हमारा बोलना, हमारी एनर्जी वेस्ट करना इज़ अनदर थिंग, लेकिन कभी कभार अपनी बाउंड्रीज़ किसी को बताना इज़ अनदर थिंग। हम ज़िंदगी की इस राह में हज़ारों लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे पास सिर्फ चंद अरसे के लिए होते हैं, कुछ लोग हमें ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है फैसलाबाद कि आपने उन लोगों को किस हद तक अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है, कि वो आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले आप ख़ुद करना चाहते हैं या आप अपनी ज़िंदगी की चाबी उनके हाथ देना चाहते हैं। महफिल में हज़ारों लोग आपकी कमज़ोरियों को ताना करेंगे, हज़ारों लोग आपको घुमा फिरा कर आपको उसी बात पर लेकर आएंगे। अगर कोई कम पैसे कमाता है तो उसको बार बार ये बात जताई जाएगी, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको बार बार ये बात याद कराई जाएगी, अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसको बार बार ये बात बताई जाएगी। लेकिन फैसलाबाद, अगर आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को शट अप कॉल देनी आती है, देन यू विल विन द रेस ऑफ योर लाइफ। अगर आप किसी को उसकी हदें बता दें, उसकी बाउंड्रीज़ बता दें, उसकी लिमिटेशंस बता दें, तो आपको पता लग जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी सुकून में आ जाएगी। और नेक्स्ट पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में ख़ामख़ा मुदाखलत कर रहा है, या उसको ये लग रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी पता नहीं कितनी खूबसूरत है, और हम में से हज़ारों लोग ऐसी ख्वाहिशें करते हैं कि वो लोग जो कि घूमने वाली कुर्सी पे बैठते हैं और बैठ के सिर्फ ऑर्डर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून है। लेकिन जब हम उस घूमने वाली कुर्सी पे ख़ुद जाके बैठते हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि उस कुर्सी के पीछे क्या राज है, और उस कुर्सी में कितने राज दफन है, और वो क्या कुर्सी पर बैठना ही असल कामयाबी है या फिर सुकून है। तो फैसलाबाद, आपके पास अभी जो भी है, जिस हाल में है, हमेशा अपनी ज़िंदगी शुक्रगुजारी के साथ गुजारें। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में आस, उम्मीद और भरोसा अपनी ज़िंदगी में, ये 3 फैक्टर्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे, यू विल नेवर विन द रेस ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में भागते रहने के लिए और मुस्तकिल कदम रहने के लिए आस लगाना, ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ख़ुद पर यकीन रखना, ख़ुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी भी हर्ट ना होने देना, और उस यकीन पर हमेशा पॉजिटिविटी रखना, और साथ साथ आपको ये तरीका और ये मंजिल, ये आस और ये ख्वाहिश, ये भरोसा आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो फैसलाबाद, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे शो। आज का शो जो है वो 1 घंटे का है ड्यू टू सम रीज़न्स, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते इस प्रोग्राम को जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जाए, और हमारा और आपका साथ जो है वो 2 घंटे का हो। लेकिन उससे पहले अपने शो को वाइंड अप करें, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिले हर बुध और जुमेरात की शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 4 to 6 एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।